Good evening. Am I audible? Good evening, sir. Audible. Okay. What is our agenda today? What are we going to complete? So actually, I had to take the Governor General class, but क्योंकि please mute कर लीजिए. Some of you whose mic is on. So actually, the agenda is that Governor General की class हमको करनी थी, but since Srimant is taking tomorrow in the morning 8 a.m. he is taking basically your part from from the Mughal Empire. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, so he is basically taking tomorrow in the morning from decline of Mughal Empire to advent of Europeans. So इसमें basically he will be covering a very substantial part, जो कि यूपीएससी एक दो सवाल आजकल बहुत फेवरेट हुआ है उनका, स्पेशली दिस various types of wars happening with the European and Indian forces. So he'll be covering the regional states that came, that is Hyderabad, Mysore, Awadh, Bengal, regional powers. He'll be taking basically Marathas, and he will be talking about the foreign powers. So basically the fight from from Dutch to British. In fact, सबसे पहले Portuguese आए हैं, so rather I should say from Portuguese to the British. जो order है इनका, PDF आप यूज करते हैं for saving documents, इसका order है PDEF. The Portuguese came first, followed by the Dutch, then the English, and then the French. The French came last and were the first to go. They came last and the first to go. Portuguese were the first to come and the last to go. In fact, Goa will be liberated when? Before 1947 or after 1947? After 1947. Yes, after 1947. It is happening in 1960s, 1962. Portuguese have come when? When has Vasco da Gama come to India? Yes. 1498. Yes, 1498. और 1510 तक तो इन्होंने कैलिकट में कब्जा वब्जा भी कर लिया है. So they have established some kind of rule there, plus they were an important navy power. So Portuguese are the first to come and the last to go. French are the last to come and the first to go. So this part, because he is taking, so a lot of wars idea you will be getting tomorrow in the morning. So therefore I have delayed my Governor General class, because I'll be discussing when we will talk about all the Governor Generals from 1765 to 1857. That will be the first slot of Governor Generals. When we will be analyzing this part, 1765 to 1857, a lot of reference will be made to these wars. This war is happening, that war is happening, subsidiary alliance, this state is going into subsidiary alliance, there is doctrine of lapse in these states. So you will have an idea, or it will be a revision in the Governor General class when you have already done this tomorrow in the morning at 8 a.m. Okay, so Governor General class I have postponed for tomorrow in the evening. Tomorrow in the evening, history will be completed from all perspectives, but we'll be doing that tomorrow. So what is the agenda for today? We are going to do all the chapters of spectrum dealing with impact of British policies in India. Impact of British policies say every year in the last 10 years, more than 60 or 70% of the time, UPSC has asked one question. One very easy but conceptual question.
like what is the biggest impact in agriculture? If I were to ask you what is the biggest impact of British in the field of agriculture in India, what will be your answer? Commercialization. Yes, commercialization of Indian agriculture. It had never happened in the past. Or private property in Indian agriculture. Land became for sale. So इस तरह के conceptual सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं. We will be covering that. So we will be covering agriculture. We will be covering industry. We will be partly covering social and political. Social and religious हम already कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर partly इसको cover करेंगे. Plus then we'll take a break of half an hour, 30 minutes. And then we will do development of Indian press. And in the context of Indian press, we will do one more document which was basically requested by one of you. I think Vashvi had requested to management कि literary work जितने भी important रहे हैं from ancient to modern times, वो एक बार हम लोग क्लास में रिवाइज कर लें all the literary works. So we have like compiled the literary work from ancient to modern times with the idea कि इसमें many of the literary works are written by kings. Those become important. Many of the literary works have been in news, especially some with respect to some Sangam literature, some with respect to Kannada. कौन सी पहली कन्नड़ में कौन सी पहली important literary work है? Kannada became prominent under which empire? So kings, news, women, all the important literary work of women. And then fourth, freedom, all the important literary work during freedom movement. इन पिलर्स को रखा है हमने एज मेन पिलर्स. ऑब्वियसली वी हैव definitely referred to some ancient writings, some medieval writings, etc. Not exhaustively, but उतना ही जितना आप अभी at this stage you can take up. Okay, so in the context of Indian press, we will be doing this as well. Okay, so agenda clear है? चलिए. So let us start doing survey of British policies in India. So see, before 1857, the British wanted to modernize India on progressive lines. There was a belief कि हम इनको modernize कर देंगे तो they will be providing markets to us. If we unleash modern forces, maybe the Indian rule will be perpetuity for them. अंग्रेजों का शासन यहाँ पर हमेशा के लिए रहेगा. They will create markets and they will create Indians who are only Indians in their blood but British in their taste. तो इन्होंने जो है 1857 तक जो है मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया, चाहे वो पॉलिटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोसाइटी हो. ऑल दिस चेंज्ड बिकॉज ऑफ द यूनिफिकेशन फैक्टर इन 1857. इन्होंने तो देखा कि यहाँ पर तो हिंदू और मुस्लिम भी एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर तो कैपिटलिस्ट और वर्कर यानी पेजेंट और जमींदार भी एक साथ लड़ाई कर रहे हैं. तो इस तरह तो हम यहाँ पर भारत में सरवाइव नहीं कर पाएंगे. दे गॉट एन आइडिया. उन्होंने इंटरनली ये डिस्कशन भी करा कि इफ अनदर रिवोल्ट लाइक 1857 हैपेंस, वी विल बी फिनिश्ड ऑफ इन इंडिया. सो ऑल देयर पॉलिसीज वर्क फॉर डिवाइडिंग इंडिया फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स. Post 1857, the entire policy is for protecting the interests of the imperial rule. ठीक है, तो सबसे पहले उसमें इनकी सबसे प्रोमिनेंट पॉलिसी जो है दैट इज डिवाइड एंड रूल. So they wanted to avoid a mass unification, so they started the naked practice of divide and rule by putting princes against the states people in the princely states, region against region. जैसे आज के समय में भी आप ये सारी समस्याएं होते देखेंगे. This is actually shown by the British only, and you will find that today also there is a north-south conflict, there is conflict in northeastern India. So all this is
majorly driven by the British policies. Province against province, caste against caste, Hindus against Muslims. And how did they do it? They used the middle and upper educated among Muslims against the rising tide of nationalism. चाहे वो सर सैयद अहमद खान हो, or Jinnah, and see, they were successful in creating Pakistan. Although I will say that Pakistan was not created by Jinnah. Pakistan was created by those who voted for Pakistan being in India. Okay, dare I say this argument that people make that we could have gone to Pakistan in 1947, but we stayed here. A fundamental question has to be asked: who are the people who voted for going to Pakistan in 1947 when the elections happened, when the Constituent Assembly was to be divided? Who voted for Muslim League? Okay, so agreed that the policy was British, but भारत में हमेशा जब भी भारत हारा है तो वो भारतीयों से ही हारा है. It has never been defeated by an outside force. Today we will see example after example: money lenders, bankers, capitalists, all of them just feeding off the British Empire in their own interest while they were Indians. Okay, so इन्होंने एजुकेटेड मिडिल क्लास को यूज किया, यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर स्कार्स रिसोर्सेज इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स एंड लेटर पॉलिटिकल स्पॉइल्स. आज आप देखेंगे that even today reservation is a big policy to divide India. Caste census is a big politics to divide India. Why? Because the resources are scarce. Therefore, still there is politicization of these things because of the scarce resources in education, administrative jobs, and political spoils. So from here onwards, first policy is their divide and rule. Second policy is hostility towards educated Indians. अब जो ये राजा राम मोहन रॉय इन लोगों को सपोर्ट करते थे, ऐसे लोगों को अब ये सपोर्ट नहीं करेंगे. Okay, because the emerging middle class provided the early leadership in the nationalist struggle. ये जो लोग पढ़ लिख लिए, इन्होंने ही 1885 में जाके कांग्रेस की स्थापना करी, एंड दिस इमर्जिंग मिडिल क्लास बिकेम द बैकबोन ऑफ इंडियाज नेशनल स्ट्रगल. ओके, नेक्स्ट, attitude towards zamindars. See, from here onwards you already know British will be siding with the reactionary people. चाहे वो प्रिंसली स्टेट के राजा हो, प्रिंसेस हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो, Britain will be always siding with these reactionary elements. And in pursuant to that policy, pursuant to the reactionary policies, British looked for alliance with the most reactionary or social groups, the princes, zamindars, etc. The British intended them to use as counterweight against nationally minded intelligentsia. So they were basically acting as breakwaters. और अंग्रेजों ने देखा था कि 1857 की लड़ाई में अगर ये लोग नहीं होते तो ब्रिटिश वुड हैव बीन फिनिश्ड ऑफ. ओके, सो लैंड ऑफ मोस्ट ऑफ द अवध तालुकदार्स was restored to them. Zamindars got back their land. Attitude towards social reform, इन्होंने विथड्रॉ कर लिया सपोर्ट फ्रॉम सोशल रिफॉर्म. ये डर गए कि अगर ये सोशल रिफॉर्म होगा, ये लोग पढ़ लिख लेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, देन द ब्रिटिश एम्पायर विल, इंडिया विल कोलैप्स. सो इन्होंने विड्रॉ कर लिया सोशल रिफॉर्म से, एंड दे स्टार्टेड इंकरेजिंग कास्ट एंड कम्युनल कॉन्शियसनेस. द ब्रिटिश हेल्प द रिएक्शनरी फोर्सेस. ओके, हमारे सोशल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, दिस ऑल्सो बिकेम अंडरडेवलप्ड because from here onwards a large expenditure on army and civil administration started at the cost of social services, which a legacy which still haunts this country. Today India lacks in education, health, sanitation, etc., because it is over 250 years of exploitation during the British. Okay, if we talk about labor legislation, we have done this yesterday in detail.
the first, the Indian Factories Act 1881, Indian Factories Act 1891, all these things we have discussed yesterday. Then we talk about the restriction on freedom of press. So press will be under restriction and liberation. There will be restrictions, liberations. Restrictions will be put up whenever the British Empire is under some kind of pressure. जैसे मान लीजिए नेपोलियन के आने का डर है, तो therefore Wellesley will put some kind of restriction on Indian press. And in 1835, Metcalfe lifted the restrictions imposed. That is why many times Metcalfe is referred as liberator of, yes, Indian press. Okay, but now we are talking of Lytton. Lytton is a time when this is just before the formation of Congress, when India's freedom struggle is becoming very, very active. Okay. So at this stage, Lytton's stage, he's a very reactionary governor general. He will be doing all the bad things with respect to Indians. Vernacular Press Act ho gaya, where Indian newspapers, they will be Indian newspapers, when I say when Indian language newspapers, उनको जो है अपना एक पत्रिका जो है डीएम साहब को ले जाके पहले देना पड़ेगा. देयर विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ प्री सेंसरशिप. और अगर इन्होंने कुछ भी गलत छापा तो इनका प्रेस जब्त हो जाएगा. दे हैड टू साइन सम काइंड ऑफ बॉन्ड्स एक्सेट्रा. इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब साइन हुआ, पास हुआ 1878 में, मेनी ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिकेम इंग्लिश डेली ओवरनाइट. फॉर एग्जाम्पल अमृत बाजार पत्रिका, आज भी एक न्यूज चैनल है ABP, अमृत बाजार पत्रिका, इन्होंने रातों रात जो है बंगाली में छापने से अंग्रेजी में छापना चालू कर दिया, बिकॉज द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. क्योंकि अंग्रेज को समझ ही नहीं आ रहा था, ये हम इतने सारी भाषाओं में लिखते थे, इनके देश में इन्होंने भाषा ही नहीं देखी थी. इंटायर यूरोप इज बेस्ड ऑन वन नेशन वन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट. अब यहाँ पर जो है हर 10 किलोमीटर में भारत की भाषा चेंज हो जाती है. they went crazy with this fact. So they said कि आपका जो अखबार है वर्नाकुलर वाला, उसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे. बिकॉज ऑफ दिस many Indian newspapers और Indian language newspapers became English daily overnight. इसके बाद लेकिन इनके बाद एक अच्छे गवर्नर जनरल आते हैं, very liberal in many senses. That is, this act was repealed in 1882. Who is the governor general in 1882? Lord Ripon. Yes, Ripon is considered liberal, and रिपन की वजह से ही बहुत सारी चीजें हुई. इंडियंस वर एबल टू गेट इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली थैंक्स टू रिपन. बिकॉज रिपन स्टार्टेड की ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये जो आपके लोकल बॉडीज हैं, दे विल बी नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर नॉमिनेटिंग टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. देयरफॉर इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग backdoor entry into the provincial and the central legislative assembly or imperial legislative assembly thanks to Ripon. ये बात कर्जन ने आइडेंटिफाई कर ली थी कि अच्छा ये लोग घुस कैसे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई कर्जन विल बी पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द लोकल बॉडीज. कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट पास करेंगे. उनको समझ आ गया था कि इंडियंस आर एबल टू गेट बैकडोर एंट्री इनटू लेजिस्लेशन बिकॉज ऑफ द लोकल बॉडीज. रिपन इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ, yes, Local self-government. yes, father of local self government in India. अब ये फादर मदर ये लोग उन्हीं अंग्रेजों के लिए होंगे, और ये लॉर्ड वॉर्ड वगैरह भी अंग्रेजों के लिए होंगे. हमारे लिए तो देवर जस्ट, चाहे वो रिपन हो, चाहे वो फंडामेंटल नेचर ऑफ ऑल ब्रिटिश रूल रिमेन्ड कंसिस्टेंट. ये तो वही बात हो गई कि आपको किसी आतंकवादी ने कैप्चर कर रखा है, आपको रोज मारा जाता है, पीटा जाता है, यू आर केप्ट इन द मोस्ट daring circumstances. Your
इंटायर प्रॉपर्टी इज कॉन्फिस्केटेड बाय देम, और एक दिन जो है आपके बर्थडे के दिन वो आपको हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। तो वो देन दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिपन एंड लिटन। ऐसा मत सोचिए कि ये लोग बहुत अलग हैं। दैट इज द स्लाइट रिलीफ दैट वी आर गेटिंग अंडर सम गवर्नर जनरल, और अदरवाइज द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल रिमेन द सेम। आज हम ये भी देखेंगे कि 3 तरह के गवर्नर जनरल्स आए हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड इंपेरियलिस्ट्स। बट ओवर द पीरियड द आइडिया वाज कि अंग्रेज शासन को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर जहां वहां कुछ भी होगा ये लोग तुरंत रिएक्शनरी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इन अगेन restrictions were put in 1908 1900, restrictions were put in 1908 1910. Can you tell me the reasons why press restrictions were put in 1908 1910? In wake of Swadeshi anti-partition and also importantly rise of first wave of, yes, revolutionary activities. revolutionary nationalism, yes, उनसे डर गए थे ये। दैट इज वाई दे आर पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेस हियर। स्वदेशी और एंटी पार्टीशन तो है ही, बट 1908 1910 में ये कहना बहुत जायज नहीं है, बिकॉज 1911 द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज, यस, cancelled, अनल्ड, यस, कैंसिल कर दिया गया 1911 में। तो सिर्फ ये कहना कि स्वदेशी और एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए इन्होंने प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ये कहना सही नहीं होगा। देयर इज अ फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बिकॉज ऑफ विच दे पुट प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, और वो यहां पर करेंगे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट दे विल बी पुटिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ अ न्यूज़पेपर और अ जर्नल कॉल्ड which was printed in US. It was a journal as well as an organization, that is Gadar, Gadar. Yes, Gadar party was there and they also printed a journal. Okay, so such kind of restrictions were put at this stage because of the first phase of revolutionary nationalism. White racism, the notion of white superiority was maintained by the colonial rulers, systematically excluding the Indians from civil and military, चाहे वो रेलवे के कंपार्टमेंट हो, पार्क्स हो, होटल्स हो, या फिर सर्विसेज हो, दोनों जगह जो है they were restricted on the basis that they are a superior race. If we talk about the British social and cultural policies, till 1813 the British followed policy of non-interference. 1813 में measures were taken to transform Indian society because of the emergence of new interests. We have already discussed, ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। 1813 में चार्टर एक्ट आ गया है, फ्री ट्रेड आ चुका है, तो एक मार्केट बनाना है, इसके लिए हम क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर देंगे, हम यहाँ पर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चालू कर देंगे, एजुकेशन विल बी गिवन अ बूस्ट. Okay, so today also there are many Christian missionary schools present all over India. Today the idea is not the same that they have any imperialist design or anything like that, but उत्पत्ति जो है वो यहां से है, from Charter Act of 1813. Now if we talk about the social and cultural scenario in India, that is changing because industrial revolution हो रहा है भारत में. Okay, second, intellectual revolution भी हो रहा है, there is socio religious reform movement, they are giving rise to attitude of new mind, manners or morals. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी हमें इंस्पायर किया with liberty, equality, fraternity. You know about Henry Vivian Dorothy already. So this is what is impacting the social and cultural scenario in India. Next, come to the school of thought among the British. So there were the conservatives among the British which advocated introduction of as few changes as possible. ये Indian civilization को अलग मानते थे, but not necessarily inferior. They said yes, Indians are different, but not necessarily inferior to us. Okay, for example, Warren Hastings, Edmund Burke, ये जो है
एंड इवन मुनरो, मटकाफ, एल्फिनस्टाइन, इनके जो आप वो देखेंगे चेंजेस, दे आर नॉट कंसिडरिंग इंडियंस इंफीरियर. ओके. एंड this book says most of the British officials in India were generally of conservative persuasion. I don't agree with this statement. Very few were of conservative. Maybe British officials कहना चाहते हैं, but British governor generals की बात करें तो there were very few who were conservative in nature. Most of them were paternalistic imperialist, which became influential after 1800. तो भाई after 1800 में कितने ही गवर्नर जनरल आए हैं? 3 ही 4 तो आए हैं. आपका वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, कॉर्नवालिस हो गए, उसके बाद वेलेस्ली हो गए, उसके बीच में एक आध जो है जॉन शोर वगैरह रहे, वरना तो प्राइमरली these are the important people. Okay, so they were sharply critical of Indian society and culture and used to justify economic and political enslavement of India. ये paternalistic imperialist में बेस्ट एग्जांपल्स में आपके वेलेस्ली हो गए, लिट्टन हो गए. इवन many people are confused where to put Dalhousie, okay, because of his some positive works, etc. I would say they are not positive works, but Dufferin, Curzon, they are all paternalistic. Okay, radicals जो है they went beyond the narrow criticism and applied. ये तो हमको सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते थे, हमको बदलना भी चाहते थे. Okay, they wanted not only to criticize us but also to change us. But predominantly the ruling element in British continued to be imperialistic and exploitative. Any modernization of India had to occur within broad limits of needs of easier and more exploitation. सारा जो रिफॉर्म या किसी भी चीज का पर्पस, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, they want to exploit India more. Entire exercise, whether it be any legislative evolution, whether it be any judicial evolution, whether it be any economic evolution, all this was to make the exploitation of India more and more easy. तो चाहे 1857 के बाद जो भी हो रहा हो, क्वीन वगैरह डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, all that exercise is happening for making the exploitation of India that much more easier. Okay. After 1858, the policy of hesitant modernization was gradually abandoned because of the revolt of 1857. 1857 के रिवोल्ट के बाद the policy of hesitant modernization was abandoned. The Indians proved to be apt pupils and rapidly moved towards modernization of society and assertion of their culture and demanded a rule. Okay, if we talk about the British policy towards princely states, the relation with princely states was guided by 2-point policy, using and perpetuating them as bulwark of empire. Basically, they had to become the breakwaters. अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करने के लिए they used to be the buffer states, कि कोई भी रिवोल्ट हो, अगर मराठास आके हमको अटैक करना चाहे बंगाल में, तो बीच में बफर क्या बनेगा? Yes, Awadh will be the buffer. So they created such kind of buffer states. Okay. Second, to subordinate them completely to the British authority, the policy of subordinate union. This was the British policy towards princely states. After revolt of 1857, the policy of annexation was abandoned, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था एनेक्स करने के लिए. मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया वर एनेक्स्ड, कुछ प्रिंसली स्टेट्स बच गए थे जो कि इनके टोटल कंट्रोल में थे. वो प्रिंसली स्टेट्स कौन से बचे थे? जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस ऑलरेडी साइन कर चुके थे. उसमें से भी जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया, द फर्स्ट स्टेट टू गो इनटू सब्सिडरी अलायंस, दैट आल्सो दे एनेक्स्ड अवध ऑन ग्राउंड्स ऑफ, यस, अवध वाज एनेक्स्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन. जो आपका सब्सिडरी अलायंस में ऑलरेडी आपका पार्टनर है, उसको तक एनेक्स कर लिया था. तो 1858 में ये कहना कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वाज अबैंडन्ड डज नॉट मेक एनी सेंस. देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू एनेक्स. देयर वाज, मोस्ट ऑफ इंडिया वाज ईदर ब्रिटिश इंडिया, which was directly under their control,
और दे वर प्रिंसली स्टेट्स विच वर सबऑर्डिनेट टू देम। तो बचा ही क्या है एनेक्स करने के लिए। बट फिर भी जो ये चीज हुई थी अवध वाली, एनेक्सेशन ऑफ अवध, इसको इन्होंने रोक दिया। द न्यू पॉलिसी वॉज टू डिपोज और पनिश बट नॉट टू एनेक्स। द स्टेट्स वर गिवन टेरिटोरियल एंड इंटीग्रिटी एंड देयर राइट टू अडॉप्ट अ आयर वुड बी रिस्पेक्टेड। और एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो आप अपने मेंस के आंसर में कभी भी लिखिएगा अगर क्वेश्चन आता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड ब्रिटिश princely states relation. The British and the princes needed one another. India's need was India's need was for either was highly doubtful. तो आज ये जो राजा महाराजा के जो हिस्ट्री बफ बनते हैं ना, देयर आर सम पीपल हु आर हिस्ट्री बफ. So according to them, India was created in 1947. Then somebody came from Bangladesh, a worker, and उनको बता दिया कि भाई when was India created by using a knife. Although I am not supporting the violence, but थोड़ा अगर इतिहास सही से नहीं पढ़ते तो यही सब होता है. Anyways, so ये जो जितने भी princely states बने, they were never for the interest of the Indians, not the princely states, the rulers there. और ये भी पूरी तरह से इनकी सोवर्निटी भी कोलैप्स हो गई when the queen adopted the title of Kaisare Hind in 1876 to emphasize the British sovereignty over entire India. So this is called the Delhi Darbar. Delhi Darbar is happening during which Governor General? Yes. सर लिटन. लिटन. एक और कैसरे हिंद, किसी एक और व्यक्ति को भी कैसरे हिंद का टाइटल मिलता है. कैन यू नेम द पर्सन? सर गांधी. Yes, Mahatma Gandhi. He also got the title of Kaisar Hind. Sorry. For his role in recruiting Indians to fight the First World War from the side of the British. क्योंकि अंग्रेज जो लड़ रहे थे वो नॉन वायलेंट तरीके से लड़ रहे थे. वो फूलों की बारिश कर रहे थे जब दूसरी साइड से बॉम्ब आ रहे थे, और वो अपना गाल ऐसे आगे निकाल देते थे when a bullet was coming from the enemy. They were fighting a non-violent war. So Gandhiji was therefore recruiting Indians to fight as soldiers in the first war of Indian independence, for which he got Kaisare Hind. It is a recorded fact. Okay. Again, the right to criticize our idols is what is the hallmark of any progressive nation. Gandhiji was a man of many flaws. Gandhism has many good qualities. So as a nation state, instead of making Mahatma Gandhi the father of nation, we should have only stuck with keeping Gandhism as a policy. Gandhism as a policy definitely is worthy of India's stature, but not, maybe in my opinion, not the other. Anyways, so the queen adopting the title of Kaisare Hind in 1876, यहाँ जो है एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ब्रिटिश पैरामाउंटसी का. यानी ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, दे आर अंडर द सोवरेनिटी ऑफ द क्वीन. थोड़ा सा इनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया कि भाई आप क्वीन के डायरेक्ट नुमाइंदे हैं, और इसलिए गवर्नर जनरल इनके कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को वाइसरॉय कहने लग गए. सो इफ आई आस्क यू हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, व्हाट विल बी योर आंसर? Lord Canning. Yes, Canning. Canning is the first viceroy of India simply because Queen became the head of India, or India got transferred from East India Empire to the British Parliament, and British Parliament का मोनार्क जो है क्वीन है, तो हमारे भी मोनार्क क्वीन हो गए. इसलिए जो है गवर्नर जनरल अपने आप को वाइसरॉय कहने लग गए विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसली स्टेट्स. ये जो ब्रिटिश पैरामाउंटसी है ये लैप्स करेगी
by India Independence Act, there will be lapse of British Parliament. देखिए कितने, I really appreciate the British for their foresightedness. यहीं से ये इनको पता था कि जब छोड़ के भी जाएंगे ना तो इनको बैल्कनाइज करके जाएंगे, इनको इतना तोड़ के जाएंगे that we will have our influence over this area for perpetuity. So 1858 से ही इन्होंने एक रोड मैप तैयार कर लिया है बैल्कनाइज करने का इंडिया को. So India Independence Act 1947 had lapse of British paramountcy, जिसमें ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे दे वर गिवन 3 चॉइसेस. या तो आप डोमिनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन जाइए, या तो आप डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन जाइए, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट. सो इट वॉज द फोर्टिट्यूड और ब्रेवरी ऑफ सरदार पटेल कि 550 में से 547 को तो इन्होंने बिना किसी युद्ध के ही जोड़ लिया. बचे कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़. यू नो द स्टोरी रिगार्डिंग ऑल 3. जूनागढ़ और हैदराबाद में पटेल टुक डिसाइसिव डिसीजन. कश्मीर में जो है नेहरू जी did or did not do. In again, I am not too critical of Nehru ji because his actions are self criticism worthy, but he happens to be India's first prime minister, so we owe him that respect. But his policy on Kashmir is definitely flawed, and the man was definitely having certain shortcomings. He was a good progressive leader, good social views, but definitely there are many things in his aspects where we can definitely say that India could have had a much better first prime minister. That is definitely not a disputable fact, but to discredit Pandit Nehru would not also be correct. Okay. So कमिंग बैक, तो हमको ये ब्रिटिश पैरामाउंसी वाला भी पता चल गया, लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी भी पता चल गया. बाय चांस पूछे व्हाट इज लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी, सो दैट पार्ट यू कैन डू. एक फायदा जो हुआ इन प्रिंसली स्टेट्स को, अ पॉजिटिव साइड ऑफ दीज मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट्स इज ब्रिटिश हेल्प दीज स्टेट्स टू अडॉप्ट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में इनका, अगर ये बर्मा पे अटैक कर रहे हैं इन द 1820s, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, देन सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर, अगर ये नेपाल का एक्सेशन कर रहे हैं, अगर ये अफगानिस्तान में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर फाइट कर रहे हैं, सो द इंटायर रीजन वाज टू प्रोटेक्ट इनवैल्यूएबल इंडियन एम्पायर. इंडियन एम्पायर के अराउंड ये एक बफर क्रिएट करना चाहते थे. एक रीजन ये था कि इंडियन एम्पायर के अराउंड इधर बफर क्रिएट किया जाए, इधर बफर क्रिएट किया जाए. सो ऊपर में तिब्बत था ही, so they wanted to create a buffer around the Indian Empire. Navy में they were the best navy of the time, so इसलिए ये एक बफर क्रिएट करना चाहते थे. So India's foreign policy was driven by protection of the valuable Indian Empire, also commercial and economic interests. अगर आप देखें तो सॉल्ट पीटर के लिए, ओपियम के लिए, there is the opium wars happening because they wanted to sell opium in China. Okay, ओपियम देके वहां से टी ट्रेड वगैरह करना चाहते थे. एंड दे वांटेड टू कीप अदर यूरोपियन इंपेरियलिस्ट पावर्स फ्रॉम कमिंग इनटू इंडिया. ओके, स्पेशली चाहे वो नेपोलियन हो ड्यूरिंग 1799 टू 1815, नेपोलियन से वो बचना चाहते थे, इसलिए वेलेस्ली केम अप विथ सब्सिडरी अलायंस. देन विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच, then they are trying to do several other things. Okay, so these are the 3 reasons which guided the British foreign policy in India. That is the first chapter. Administrative policies में divide and rule, hostility towards educated Indians, जमींदार्स and landlord को support करेंगे ये, reverse of support to social reform. Now they will be supporting the opposite. They will break India based on caste, religion, region.
लेबर लेजिस्लेशन के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं. दे डिड नॉट वांट लेबर लेजिस्लेशन से, बेसिकली दे वांटेड टू सप्रेस इंडियन कैपिटलिस्ट और इंडियन इंडस्ट्री. देयर वाज रेशियल एरोगेंस, व्हाइट मैन्स बर्डन. ये अपने आप को बर्डन मानते थे कि हम जाहिल हैं, ये हमको सुधारना चाहते हैं. सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज we have already studied in socio religious reform movement before 1857. So, or rather I should write before 1813, 1813 to 1857, and 1857 onwards. All the three stages you are well aware of. Before 1813 there was policy of cautious intervention or non interference. 1813 से ये इंटरफेरेंस करना चालू करते हैं बिकॉज ऑफ फ्री मार्केट. 1857 से ये ऑपोजिट चले जाते हैं और रिएक्शनरी एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं. फॉरेन पॉलिसी में हमने देख चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी में ये अदर यूरोपियन पावर्स को बाहर रखना चाहते थे, ब्रिटेन के कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे. दैट इज द रिविजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. इज इट क्लियर? यस. Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके. सो सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल. ये दो चैप्टर करके फिर हम प्रेस वाले पे आ जाएंगे, और प्रेस के कॉन्टेक्स्ट में ही वी विल डू द इंटायर लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. ओके. सो द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक लाइन में अगर देखा जाए तो एट द बिगिनिंग ऑफ 18th century इंडिया हैड 23% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी. व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट it got reduced to 3% of the world economy when India got independence. Okay. So the main difference between the British colonists in India and early invaders was none of the early invaders made any structural changes in Indian economy or drained away India's wealth as a tribute. Okay. So for example, the Mongols, the Mughals, Turks, Afghans, they are also coming to India, but none of them tried to make any structural changes to economy, religion, etc. They are making many structural changes, but any structural change to economy, that they were not doing, and none of them were draining India's wealth. Maybe because railways and shipping was not that developed. It would have been another matter if those things were developed, or another discussion. Okay. So first डिटेल्ड सर्वे ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट में पहला आ जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में देयर इज रूइन ऑफ द आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्टमैन, क्योंकि वन वे फ्री ट्रेड हो गया. चार्टर एक्ट 1813 अलाउड फॉर वन वे फ्री ट्रेड फॉर द ब्रिटिश सिटीजन्स, यानी ब्रिटेन से भारत में जो इंपोर्ट आ रहा था वो फ्री हो गया. और ये इंपोर्ट कैसा है? ऑफ चीप मशीन बेस्ड गुड. और इसको कंपीट किससे कराया गया? विथ इंडियन हैंडमेड गुड्स. दूसरी बात क्या है कि हमारे हैंडमेड गुड्स पे 80% ऑफ टैरिफ वाज इम्पोज्ड. 80% of the tariff was imposed on Indian textile so that Indian clothes could no longer be cheap. After 1820, European markets were virtually close to Indian exports. और इन्हीं के एक गवर्नर जनरल देखिए क्या कह रहे हैं, हमको बताने की जरूरत ही नहीं है. The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of cotton weaver are bleaching the plains of North India. अब दूसरी बात क्या है कि जो रेल नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ, रेल नेटवर्क इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं था. रेल नेटवर्क वाज मियरली कमर्शियल इन नेचर. इसका काम क्या था? रॉ मटेरियल को लेके जाना पोर्ट्स तक, ताकि वहां से ये एक्सपोर्ट हो सके रॉ मटेरियल भारत से. एंड सेकंड, फिनिश्ड गुड्स को पोर्ट से हिंटरलैंड में ले जाना. फिनिश्ड गुड्स विच आर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन, उसको हिंटरलैंड में ले जाना, ये रेलवे का काम था. रेलवे का काम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, कोयला, स्टील, पावर, ये सब कैरी करने के लिए रेलवे को नहीं बनाया गया था.
रेलवे को बनाया गया था इस पर्पस के लिए. दैट इज वाई इंडियन रेलवे का अगर कभी ये अंग्रेज उदाहरण भी दे कि हमने आपका रेलवे लेके आए, तो उसको घुमा के जो आप उनका स्वागत कीजिए. That's it. Okay, because you will have to tell them that the purpose of railways is to create industrial revolution. They created a commercial revolution just for exploitation. They wanted India to be a raw material source and a market for their finished goods. That is how the railway lines were built. Railway lines were never built for the purpose of industrialization. और उसके बाद जब इन्होंने पुरानी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय की, तो इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया टुवर्ड्स मॉडर्न इंडस्ट्री. 1800 तक जो है इंडियन इंडस्ट्री को ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं इन जस्ट 30-40 इयर्स. बट इंडियन इंडस्ट्री नई आते आते 1853-54 में रेलवेज आ रहा है, कॉटन टेक्सटाइल आ रहा है, जूट टेक्सटाइल आ रहा है. अगले 50 साल तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. There is no modern industry for the next 50 years. Okay, so there is loss of traditional livelihood was not accompanied by a process of industrialization in India, as had happened in other rapidly industrializing countries of the time. इससे क्या हुआ, इंडियन आर्टिजन और हैंडीक्राफ्ट वर ऑलरेडी फीलिंग द क्रंच, क्योंकि जो प्रिंसेस और नोबिलिटी थे उनको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया. अब ये क्या करेंगे, दे विल बी going towards agriculture. So अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए impact of British rule on Indian cities, another feature was the decline of many cities and process of ruralization in India. So because of the British, India became rural. Cities declined in India. Here only if I ask you a question, what is India's first urbanization? अगर भारत का पहला अर्बनाइजेशन आपसे पीरियड पूछा जाए, व्हाट विल बी योर रिस्पांस? Indus Valley Yes, civilization. Indus Valley civilization. IVC is the first urban culture. Second urbanization, second phase of urbanization, Mahajanpada period. Mahajanpada period. So basically, this is the time when Jainism and Buddhism are becoming prominent in India. So we can call it 5th century BC. Indus Valley के लिए डेट फिक्स नहीं है, anywhere between 2600 BC to 1700 BC Indus Valley को माना जाता है. इसके बीच में, while India is developing very fast, but India is more rural oriented societies during the Vedic age. So Vedic age के decline के बाद, when there is coming of Jainism and Buddhism, and politically there is coming of Mahajanpadas and coming of empire in India, that is the Magad Empire. India has next phase of cities. Magad के बाद, Magad will be replaced and Mauryan Empire will be coming when Chandragupta Maurya will be killing and Dhananda and establishing the Mauryan Empire with the help of Chanakya. So अंग्रेजों के समय में ब्रिटेन में लंदन और ऐसी सिटीज बन रही हैं, भारत में जो है गांव बन रहे हैं. Okay. So during the company's rule, artisans were paid low wages, forced to sell their product at low prices, abandoned their profession and moved to villages, took to agriculture. This resulted in increased pressure on land, and overburdened agriculture was the major cause of poverty during the British rule. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, which of these factors is the main cause of poverty in India? Overburdened agriculture was the main cause of poverty during the British rule. अब ये जो हमारा पेजेंट्री है, क्योंकि हम पेजेंट मूवमेंट देख चुके हैं, तो हमारे पेजेंट्री को 3 लोग परेशान कर रहे हैं. यू ऑलरेडी नो कौन से 3 लोग. देयर इज जमींदार, देयर इज money lenders, yes, there is money lender, and there is the British revenue officials. So the government was only interested in maximization of rent and securing its share of revenue.
They enforced the permanent settlement system in large parts. Transferability of land was one of the features of new settlement. Okay, there was little spending on government for improvement of land productivity. Zamindars जो है, they resorted to various kind of bad practices such as begar, etc. Money lenders often were the village grain merchants. They forced the farmer to sell the produce at low prices. They also manipulated the judiciary and law in their favor. So the peasant was triple burdened by the government, zamindar, and money lender. And this is true in zamindari areas as well as rayatwari and mahalwari areas. The peasant at this stage became landless. Rayatwari and mahalwari are सिमिलर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. अगर रैयतवारी की बात करें तो कहां पर चालू हुआ था और महलवारी कहां चालू हुआ था? यस, परमानेंट सेटलमेंट यू नो इज इन बंगाल. परमानेंट सेटलमेंट बंगाल है. बंगाल का मतलब हो गया बंगाल, बिहार, ओडिशा. व्हाट अबाउट रायतवारी सिस्टम वेयर द रायत एटलीस्ट हैड टेक्निकली लैंड राइट्स? इसमें जो है अंग्रेज खुद इससे रेवेन्यू लेते थे. देयर वाज नो जमींदार और मिडिलमैन इन रायतवारी सेटलमेंट सिस्टम. टेल मी द एरियाज ऑफ रायतवारी. Madras. Yes, Madras. Madras and parts of Bombay. Mahalwari, majorly in Western India, Punjab and those kind of regions. Okay, where mahals were created और उनसे एक तरह से कलेक्टिव विलेज रेवेन्यू जैसी चीज. ये देखिए, ये क्या कर रहे थे? ये बेसिकली मैक्सिमाइज करना चाहते थे लैंड रेवेन्यू. इसके लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किस तरीके से हमको मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू मिल जाए. देयर लैंड रेवेन्यू वाज इवन हायर देन द मुगल्स. यहाँ पर तो 50% से ऊपर लैंड रेवेन्यू था. तो पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने ट्राई किया कि कुछ लोगों को जमीन बेच दें, ऑक्शन कर दें और उसके अगेंस्ट में लैंड रेवेन्यू लिया जाए, बट वो फेल हो चुका. तो उसके बाद कॉर्नवालिस आए. कॉर्नवालिस ने जो है परमानेंट सेटलमेंट चालू किया इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. उसके बाद रॉयतवारी आया जिसमें लॉट ऑफ रोल वाज प्लेड बाय जॉन शोर एंड देन महलवारी. लेकिन सभी में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जस्ट टू नो हाउ टू मैक्सिमाइज लैंड रेवेन्यू. What was one of the impact? Emergence of intermediaries, absentee landlordism. By 1815, half of the total land in Bengal had passed into new hands, merchants, money lenders. पुराने जो जमींदार हैं वो dispossessed हो गए. That is why these zamindars, they will be revolting in 1857. One important leader, very iconic leader of 1857 revolt from Bihar is, yes, Sir, Kuwar Singh. बाबू वीर कुंवर सिंह. देखिए, अब यही समस्या है. अंग्रेज को आप कहते हैं लॉर्ड और इनको कहते हैं कुंवर सिंह. Sir, I always read his name. किसी भी book में as Kuwar Singh only. अच्छा. So he was dispossessed zamindar. He supported the movement and he had some progressive elements, etc. He got also treacherously caught because of some kind of deceit by his partner. Okay, so अब हुआ क्या कि एक मनी लेंडर है, इसने जमीन जो है किसी एक कलेक्टर को दे दी, कलेक्टर ने जो है एक और कलेक्टर को दे दी. सो देयर आर नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज. इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज लेड टू एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म. और ये सब जो है बेसिकली अपना अपना शेयर करते जा रहे हैं. लास्ट में जो है शेयर देना पड़ रहा है पेजेंट को. तो पेजेंट का तो जो है रेवेन्यू और भी बढ़ गया एंड सरकार कुछ भी स्पेंड नहीं कर रही है ऑन प्रोडक्टिविटी. सो दिस लेड टू stagnation and deterioration of agriculture. The cultivator had neither the means nor any incentive to invest in agriculture. And this led to famine and poverty. Regular occurrence of famine became a common feature. 2.8 crore people killed in famine. क्या ही बोला जाए. So next, commercialization of Indian agriculture. Commercialization दो parts में हुआ. First, transferability of land and second, growing of cash crops.
Okay. So one, agriculture was a way of enterprise. Now land became transfer. It became a business enterprise, and certain specialized crops began to be grown, not for consumption, but for sale. For example, cotton, jute, groundnut, oilseed, tobacco, etc. The commercialization trend reached the highest level in the plantation sector, that is tea, coffee, rubber, indigo. For the Indian peasant, commercialization seemed a forced process. There was hardly any surplus for him to invest in commercial crops. And commercialization linked Indian agriculture with international market trends. तो जब प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा था, जैसे कि आपने देखा है प्राइस फ्लक्चुएशन स्पेशली इन इंडिगो, स्पेशली इन कॉटन, तो इसका जो ब्रंट है वो भी इंडियन फार्मर को बेयर करना पड़ रहा था. दैट इज वाई इंडिगो रिवोल्ट विल बी हैपनिंग, एंड कॉटन से रिलेटेड रिवोल्ट हैपेंड इन द डेक्कन एरिया कॉल्ड डेक्कन राइट्स. Okay, so destruction of industry and late development of modern industry we have already discussed. भारत में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन्होंने, ब्रिटिश स्टॉप्ड पेइंग फॉर इंडियन टेक्सटाइल इन पाउंड्स, choosing instead to pay from the revenue gained from Bengal. So there is therefore drain of wealth. हमारा ही पैसा लेके हमारा ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वो प्रोडक्ट बिक रहा है ब्रिटेन में. So this is drain of wealth. Then a thriving shipbuilding industry was crushed. Surat and Malabar on western coast and Bengal and Masulipatam on eastern coast were known for their shipbuilding. आज भी आप देखेंगे तो there is Mazgaon dock, there is Garden Reach Shipyard Limited, then there is Cochin Shipyard Limited. You will find that they are present on the two coasts even today. So 1813 में एक ये लॉ लेके आए which prohibited ships below 350 tons from sailing between. हम छोटे शिप्स बनाते थे 350 टन के, एक ये कानून लेके आए और बैन कर दिया. अगर आपको थोड़ा भी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता है तो ऐसा ही ये एक लॉ लेके आए, टाउनसेंड लॉज या पता नहीं क्या है उसका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द करेक्ट लॉ, विच हैपेंड इन अमेरिकन रिवॉल्यूशन. जिस जबकि ऐसा ही लॉ वहां आया तो उसके अगेंस्ट में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो गया. स्पेशली अ वेरी फेमस इंसिडेंट इज द टी पार्टी, वेयर जो सारा कार्गो है टी वाला उन्होंने पानी में फेंक दिया. एंड दिस लॉज, आई थिंक if I am not wrong, you can correct me, but as far as I remember, it was called Townsend laws or something like that, or maybe there is also a separate legislation with respect to this shipping. जैसे ही वहां पर भी उन्होंने ऐसी सिमिलर रिस्ट्रिक्शन लगाए, there it became one of the contributing factors to American Revolution. पर भारत में ऐसा हो नहीं पाया. ठीक है. Also the British did not allow Indian steel industry to grow. इन्होंने जानबूझ के टाटास को फोर्स किया कि आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टील बनाइए फॉर ब्रिटिश यूज, जो लो स्टैंडर्ड जिसकी मार्केट भारत में है वो मत बनाइए. so they were not able to develop. And Indian traders, money lenders, bankers, they amassed some wealth as junior partners of British English capitalists. यही मैं बात कह रहा था कि इंडिया जो है, rather I should call it also Bharat in this context, that we have always been defeated by ourselves and not by outsiders, which is the same case happening today also. For example, you might be aware of certain YouTube influencers who are caught spying. Just for some money, you are ready to sell your nation, you are ready to sell your people. Again, very, very alarming. So, भारत में कोई रियल इंडस्ट्री नहीं आ रही है. It was only in second half of the 19th century that modern machine-based industries started coming. First cotton textile in 1853 by Kawasji Nanabhai in Bombay. First jute mill came in Risra in 1855. Indian owned industry came in cotton textile and jute in 19th century. ऊपर हमने देख लिया Kawasji Nanabhai and Risra वाला. बट शुगर और सीमेंट में तो 20th सेंचुरी में आ रहा है. इट इज कमिंग इन 20th सेंचुरी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट contributed a lot in indigenous industrialization.
In fact, even steam navigation companies came, VO Pillai, etc., during Swadeshi movement. So till here, is there any problem? Yes. Next, the industrial development was characterized by lopsided pattern. Core and heavy industries and power generation were neglected. Some regions were favored more than the others, therefore causing regional disparities. टेक्निकल एजुकेशन के भी नहीं था, कॉलेजेस टेक्निकल एजुकेशन के लिए नहीं आए थे, so there was not even the sufficient manpower. And very importantly, one of the successful things done by the Indian moderates is that critique of economy. yes, which critique? Economic critique of British Empire. It will be done by foremost among these nationalists is दादा भाई नौरोजी, the grand old man of India. इन्होंने ही एक थ्योरी दी, that is the economic drain of India, in a book called Poverty and Un-British Rule in India. इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब क्या है? A portion of India's national product or GDP was not available for consumption of its people and was being drained away to Britain for political and not economic reasons. हमारा जो GDP का एक पार्ट है, it is going to England. In exchange, we are not getting anything. The reasons for part of India's GDP going to England is political in nature. इन्होंने बोला कि मेन कंपोनेंट्स क्या है हमारे ड्रेन के? सैलरी एंड पेंशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स. सोचिए, यहां पर सर्विस देके वो ब्रिटेन में चला गया, रिटायर हो गया, और उसकी पेंशन हम भारत से दे रहे हैं. जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ drain that India went through, the kind of loot that India went through. Then interest on loans taken by government from abroad, profit on foreign investments in India, payment to be made for shipping, banking and insurance services, which stunted the growth of Indian enterprise in these services. This retarded capital formation in India, while the same portion of wealth accelerated the growth of British economy. This is what he wrote in Poverty and Un-British Rule, famously called as the drain of wealth theory. This is the drain of wealth theory. So the moderates, they were successful in exposing the British drain of wealth of India. He was ably supported by Justice Mahadev Govind Ranade, R.C. Dutt. R.C. Dutt ने इनफैक्ट एक कंपैरेटिव किताब लिखी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी कि पहले हम कितने थे, तब कितने हुए, लास्ट 2000 साल में कितना हुआ. गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पृथ्वी चंद्र रे, they were all important leaders who wrote about the economic collapse of India. इन्होंने बोला कि आपकी पॉलिसी से इंडिया इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सप्लायर ऑफ फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट फॉर द मेट्रोपॉलिटन मैन्युफैक्चरर्स. They were able to show that the cause of India's economic backwardness was man-made. India was poor and was growing poor due to British imperialism. They were able to expose this, that British rule was for favor of Indians. They were able to break that myth. Okay. They even exposed the British argument that growth of foreign trade and railways implied development for India. They pointed out that India was relegated to the position of importer of finished goods and exporter of raw materials, and the Indian industrial needs were not met by railways. Railways was a commercial rather than an industrial revolution. In this context, G.V. Joshi remarks, expenditure on railways was an Indian subsidy to British industries. Okay, one-way trade we have already seen how it impacted us.
इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ड्रेन देखा जाए तो इट अमाउंटेड टू 8% ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. This led to breaking the myth that the foreign rule was in interest of Indians and exposing the myth of its moral foundations. देखिए इनके दो फाउंडेशन थे, एक मॉरल कि हमारी रूल आपके लिए अच्छी है, ये मॉडरेट्स ने ब्रेक कर दिया थ्रू द इकोनॉमिक क्रिटिक, और दूसरा जो है एक मिलिट्री मिथ था या मिलिट्री फाउंडेशन था दैट वी आर अ सुपीरियर मिलिट्री which was broken by Gandhiji's peaceful methods of satyagraha and ahimsa. Okay. Now, stages of colonialism, you may skip at this stage, but very quickly let me revise. First stage 1757 से 1813 में है. This is called mercantilism, where the entire Indian economy is basically for British economy in Britain. करना क्या चाहते थे? टू अक्वायर अ मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया एंड टू डायरेक्टली अप्रोप्रिएट और टेक ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू थ्रू कंट्रोल ओवर स्टेट पावर. तो यहाँ पर बेसिकली इनको रेवेन्यू और ट्रेड के ऊपर फोकस करना था एट दिस स्टेज इन द फॉर्म ऑफ मर्केंटलिज्म. दिस इज द फर्स्ट स्टेज 1757 टू 1813. 1813 से सेकेंड स्टेज आएगा विच इज कॉल्ड द एरा ऑफ फ्री ट्रेड. दिस इज द कैपिटलिज्म ऑफ free trade regime where India was now to serve the British capitalist interests. India was to be the market for the ever increasing output of British manufactured goods as well as their textiles. So the export of raw material was increased sharply to meet the dividends. पहले स्टेज में रॉ मटेरियल नहीं भेज रहे हैं हम. फर्स्ट स्टेज में देखेंगे आप तो देयर इज नो लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया, रादर द रिवर्स इंपोज. There was an increase in export of Indian textile. 1757 से 1813 तक ये हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं. After this, rather I should say 1813 onwards, now we are exporting raw material क्योंकि उनकी इंडस्ट्री अब सेट हो चुकी है. उससे पहले उनकी इंडस्ट्री सेट हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज सेटिंग अप, बट वंस इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेम सेट by the 19th century, that is the when I call 19th century, so 1800 से लेके और 1857 के बीच की बात कर रहे हैं. तो उस समय जो है हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल और इनका फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं. सो देखिए थर्ड स्टेज हम जब देखेंगे तो दिस इज द एरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कॉलोनीज. यहां पर जो है they are now investing in India and they want to protect the Indian empire from other colonial interests. So at this stage, liberal imperialist policies got replaced with reactionary British policies in the viceroyalties of Lytton, Dufferin, Lansdowne and Curzon. क्योंकि अब ये कंसर्न भी हो गए थे और पावर्स भी आ गए थे, जर्मनी आ गया था, जापान आ चुका था. So they wanted to protect the Indian interests and therefore such kind of reactionary governor generals came. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ बिकॉज ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो डाउन हो चुका था, भारत एक नया एक्सपेंड कर रहा था. सो नाउ दे इन्वेस्टेड फॉरेन कैपिटल. मान लीजिए रेलवेज में इन्वेस्ट किया और इसका रिटर्न 10% आसानी से इनको 5% 10% मिल जाता था. ओके, सो दैट इज द इम्पैक्ट. एक बार इसकी समरी देख लेते हैं. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रूइन ऑफ आर्टिजन एंड हैंडीक्राफ्ट, empowerment of peasantry, old zamindars they were dispossessed, there was stagnation and deterioration of agriculture, Indian agriculture was commercialized, there was development of modern industry but it was late, there was rise of Indian capitalists, there was economic drain, famine and poverty. जो moderate का critique है, India was getting poor due to colonial exploitation, problem of poverty and national problem. Okay, so that is the revision of this chapter. Okay, so we will pause here for half an hour. At 10 p.m. we will start with development of Indian press, and second part is the literary work from ancient to modern times.
Okay, ये literary work, do you want to take up, just do you want the material or should we discuss? Yes, Material. दोबारा बोलिए. I'm not able to follow. Should we discuss or simply you will read the material at your end? So the brief discussion would work. I'm not able to follow what you're saying. So we can read, no problem. So you can read from, it is self-explanatory. Many things are given, you can read it. But अगर किसी को चाहिए कि नहीं हम बैठ के अभी discuss भी कर ले, so we can spend half an hour, 45 minutes. I have no problem. We can discuss the important books and some of the things written in that. Okay. Let me know. We'll be connecting in some time for discussion of development of Indian press, the various restrictions, etc., plus the various journals also. The various journals written during freedom struggle. राजा राम मोहन राय की कौन सी थी, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी जो है हम कई बार पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं. देन जो इंग्लिश जर्नल्स हैं जो इंडिया में पब्लिश हुए हैं, स्पेशली बंगाल गजेट एक्सेट्रा, एंड ऑब्वियसली द वर्नेकुलर आर्टिकल्स, प्लस जो न्यूज में रहे हैं, जैसे कविराज मार्ग, इट हैज बीन इन न्यूज. ओके, so those which have been in news, that part also you can see from the material. If you want, we can take that discussion simultaneously. अगर आपको discussion चाहिए तो आपको, you'll have to tell me right now only, because I'll have to schedule accordingly. Okay, so we'll meet again at 10 p.m. It's 9:24. We'll meet at 10 p.m. and do the development of Indian press, as well as literature from ancient to modern times. If you want that discussion, we can do that as well. Okay. So thank you. Have your dinner and we'll reconvene. Okay. Thank you, sir.